Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau. Then we will have one more class on it. Fine. Then थोड़ा सा और जब गांधी अंबेडकर को हम इंडियन थिंकर को पढ़ लेंगे, then we will have one more again on ethics. So how many of you are aware with Machiavelli? How many of you know about little bit about Machiavelli? Okay, Abhinay, share your information. Sir, he was basically from Italy and he was an expert statesman. So he has written a book called The Prince, where basically he tells about how a ruler should rule or how a statesman should rule his kingdom. And he basically tells there is this one very famous saying that a ruler has to be clever like a fox and brave like a lion. Right. And sir, he basically tells that whenever ruling in statecraft, ethics are separate and statecraft is separate. Like you cannot add ethics to politics or statesmanship, sir. Yeah. This much, sir. This much. Very good. Very good. Very good. Excellent. Very good. Yes. What about others? Atir, क्या जानते हो इनके बारे में? मैकियावेली कभी सुना है इनके बारे में? ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसको? सर मैं तो पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ. पहली बार ही नाम सुने हो? उस पर से अभी पता चला इसको मैकियावेली बोल रहे हैं. मैं सबसे मच्छी वाली बोल रहा था. मच्छीवेली. मच्छीवेली. हाँ सही है, सही है. Yes, Ila. Do you know about him a little bit? Because he's a famous scholar. So yeah. I only know that Machiavelli exists and he's a modern thinker. That's it. Why he was called modern thinker? Sir, I don't know. I tell you that I just know his name and just that he is a modern thinker, nothing else. Why he was a modern thinker? Or what is modernity? What is modernity? The revolution के जो thoughts होते हैं, जैसे जो pre-existing जो मतलब जो functions थे उनको reform करने के लिए जो thinking होती है towards modernity, जिसमें हमारे rights वगैरह आते हैं. Political philosophy, मतलब Aristotle and Plato also tried to discuss, but वो एक past मतलब एक thinking थी जो उस time prevalent थी, but वो modern era को नहीं suitable थी ज़्यादा. तो उसके बाद Machiavelli like modern thinker जो हमें ज़्यादा अच्छे से suitable thinking provide. But Machiavelli did not talk about rights. Maybe sir. He didn't talk about rights and liberty of individual. Anyway, वो तो आप बताओगे. हाँ मैं तो बताऊंगा, of course. I will tell you everything. But what is modernity? Okay, why? What do you comprehend when one say you are very modern? Sir, maybe transition from city-state to nation-state. One is the important. Yeah. So modern institution like nation-state. Yeah. So not city-state, Avinay. City-state to, I told you, empire and empire to modern nation-state. Right? Modernity हम लोग पढ़ चुके हैं. दर्जा, yes, right. So the modern institution, political institution or modern polis, that is called nation state.
And Machiavelli was actually the philosopher who proposed the idea that was actually very helpful to establish modern nation state. So that is why he's called modern nation. So one of the criteria you have Avinay pointed out, that the unit in which the political unit in which we are living, जिस political unit में हम लोग रहते हैं उसको आज हम नेशन स्टेट कहते हैं. जैसे हम पूछते हैं हमेशा आप किस देश में रहते हैं, अगर आप जाएंगे, मान लीजिए आपने ईस्टर्न यूरोप का ट्रैवल किया और ईस्टर्न यूरोप में आपको पूछेंगे कि वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट विल यू से, हमेशा आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया. What is India? Right? What is India? Then what would you define? Right? In a very short, it is a state, nation state. It is a country. It is a country, right? Like other country of the world, right? So, अभी जो हम modern time पे रह रहे हैं, we are living in a political association that is called nation state, right? What are the other criteria of modernity? Sir, changing ourselves along with the times. What is that change? वही तो बताना है. ये सारा change ही है. But what are the technology? Change? Is science and technology? Yes, very good. Sir, mentality and ideology. Science and technology, individual freedom. So if you look at the Aristotelian idea, he actually liked freedom, but he was more about the society. But Machiavelli promoted individual freedom. Again, pragmatism, Janvi is trying to state, yes, you can say pragmatism. But pragmatism and idealism always remain in parallel everywhere. Abhi bhi hai. Marx was a very idealist thinker. Yes, Nishtha, guaranteed rights to citizen. Yeah, we can say, right? But Machiavelli के context में नहीं कह सकते. But if we talk about yes, modernity means we have modern institution like nation state, modern document like constitution, right? Which provides right. Okay, what about other thing? What about literature? Art. आप लोग किसी ने बोला culture. Right? So if you look at 15th century, there's a lots of changes. Changes from what? अच्छा, modern से पहले क्या था? उसको बोलते हैं pre-modern world. What was that? Pre-modern world. Pre-modern world. What was that pre-modern world? And Avnai said कि sir, modern world था कि जब nation state बनने लग गए थे, right? When nation state is, came into being and they started to have relationship. Before pre-modern world, what was the world? Before modern, how was the pre-modern world? Yes, Nishtha, exactly. So it was actually empire first, and it was very much, religious. So church used to rule. Church used to have a rule, and it was of course despotic.
it was, of course, it was a despotic. So pre-modern world को हम medieval world भी बोलते हैं, right? Medieval history पढ़ते हैं आप लोग? कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। medieval world बोलते हैं और फिर उसके बाद modern world बोलते हैं। ओके, कोई टाइम बता सकता है कैसे हम बांट सकते हैं एंशिएंट को? मैं बताता हूं अब। लेट मी टेल यू द टाइम वी डिवाइड फ्रॉम एंशिएंट टू medieval and medieval to modern. So if you look at the history of the world, you know, till 5th century, right? And उससे पहले आप कुछ भी चले जाइए, no, 6th century BCE और AD, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर कौन सा ये था, एथेनियन सिटी स्टेट के बाद you can say here was Macedonia was a great empire, right? And in 5th century AD, the Roman Empire, have you heard of Roman Empire? So Roman Empire came and then it declined basically. And after 5th century to 15th century, we call medieval world or pre-modern world. Or pre-modern world. Why we call it pre-modern world? हम pre-modern world क्यों कहते हैं इसको? Okay, Amisha, let me do it. मैंने क्या कहा था कि प्री-मॉडर्न वर्ल्ड में किसका, रिलीजन का बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था, तो चर्च का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। अभी जो हम फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ द वेस्ट, एंड इफ यू लुक एट द वेस्टर्न सोसाइटी in pre-modern time, that means in medieval time में अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखें तो चर्च का बहुत बड़ा रोल था। चर्च हर चीज डिसाइड किया करती थी। Of course, it was a very much a despotic role, right? There's a Bourbon Empire, there was Habsburg Empire in the West. If we talk about India, there was a Mughal Empire, right? In India. If you talk about the West, there was the Ottoman Empire. Have you heard of Ottoman Empire? Empire of the Turkey, right? Yeah. So बड़े-बड़े empire हुआ करते थे, right? तो अगर आप बोलेंगे कि सर ये है ancient history, ancient world, 6th century BCE से लेकर के 5th century AD तक, कहां पर? वेस्ट की बता रहा हूं मैं, इंडिया के मत लेना, इंडिया का कुछ अलग है, इंडिया का बहुत पुराना है। 6th century BCE से लेकर के 5th century AD तक, राइट? उससे थोड़ा पहले भी हो सकता है, बट मैंने ऐसे ही रफली जस्ट आई हैव पॉइंटेड आउट। सो इफ यू लुक एट द 3rd century BCE, 4th century BCE, in which Plato, Socrates, and Aristotle, as a philosopher, we have gone through, right? But in Roman Empire, there was a philosopher, and Roman Empire was an empire of the fighting, muscles power, right? They built a very big empire, Roman Empire.
there was one statement goes like this: Rome was not built in a day. You must have heard of it. ये सुना होगा, Rome was not built in a day, right? So, but Rome declined in 5th century AD, right? हमारे syllabus में नहीं है, and no need to go. One thing I would like to tell you, उस दिन अंश ने मुझे टोका था, right? कि सर legal word और legal आप मैंने बोला कि नहीं यूज करते क्योंकि रोमन जो है लीगल जो जस्टिस है, लॉ, राइट, जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हैज डन बाय रोमन. ओके अंस, सो उसने कहा कि सर आप भी लीगल वर्ड यूज कर रहे हैं, उसको हटाइए. तो फिर हमने लॉफुल मींस वगैरह यूज किया था. आप जब 6th सेंचुरी बीसी के देख रहे हैं, वहां पर सिटीजनशिप वाज वेरी मच नॉर्मेटिव. लाइक सिटीजनशिप किसके पास था? वही जो कलेक्टिव अफेयर ऑफ द स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? वुमेन वाज नॉट मेंबर, एंड अदर वर्ड मेंबर, देयर वाज नो. सो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था कि जो लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कलेक्टिव अफेयर ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर ऑफ द स्टेट, लीगल अफेयर ऑफ द स्टेट, और एनी लॉ मेकिंग process. If you talk about Roman Empire, here, law was codified and citizenship was linked to membership of the state. If you are member of the particular territory, you are citizen. If you are not member of that community, that territory, then आप citizen नहीं हो, right? रोमन एम्पायर में क्या हुआ आकर के हमेशा, यहां पर सिटीजनशिप का मतलब था एथेंस में कि अगर कोई कलेक्टिव अफेयर ऑफ द स्टेट में पार्टिसिपेट करता है, डिफेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, लीगल ऑफिस में, वगैरह वगैरह, रोमन एम्पायर में सिटीजनशिप को लिंक किया गया एज अ मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, राइट? यहां पर लॉ को कोडिफाइड किया गया, राइट? और कहा गया कि कोई भी सिटीजन कब है? जब वो पर्टिकुलर एरिया का के अंदर रहता है. ऐसा नहीं कि स्लेव यहां पर नहीं था, यहां पर भी स्लेव थे, राइट? बट जो यहां पर एक्सक्लूजन था कि अदर लोग मेंबर नहीं हो सकते हैं, यहां पर स्लेव और सिटीजन था. यहां पर मास्टर और स्लेव थे, राइट? यहां पर स्लेव एंड सिटीजन्स थे. So all member of the particular community was citizens. Even today, if we talk about India or Pakistan or any other country like Iran, citizenship is linked to the territorial boundary. If you are a member of that territorial boundary state, then you are a citizen, right? So still citizenship has Roman, element. Anyway, so 6th century BCE to 5th century AD called ancient world, or 5th century BCE to 15th century BCE is called pre-modern world or medieval world, right? And 15th century onward, what we call modern world. What we call modern world. 15th century onward. Okay? Am I clear? ये जो clear है इतना? Medieval, ancient, modern. Right? So we cannot understand modern world without understanding pre-modern world, because differentiate तो करना पड़ेगा कि what is that difference. So just we will try to understand what was the characteristics of the pre-modern world, right?
So and it's also called middle age, medieval world, right? So मॉडर्न वर्ल्ड समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो समझना है, लिखना कुछ नहीं है, राइट। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में एक तो ये था कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। इट वाज अ बिग एम्पायर, राइट, लाइक हैब्सबर्ग एम्पायर, Bourbon Empire in Europe, Ottoman Empire in the Middle East, Mughal Empire in India, right? So it was a big empire. So the territorial boundary was very large. Fine, clear? The first component of the medieval or pre-modern world. Making sense or not? Right? Okay. Then if you talk about, एक तो मैंने बता दिया, कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है। अगर लिखना है तो एक आध वर्ड जिसमें लिख रहा हूं वैसे लिखिए। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड पहले हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड नहीं पढ़ेंगे। जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा तब आप मॉडर्निटी से रिलेट नहीं कर सकते, राइट। सो इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, you know, territorial boundary was very large. Territorial were very large, right? It was a time of big empire. Right? For example, आप लिख सकते हैं, for example, Habsburg, Habs, B-U-R-G, और Bourbon, Bourbon का B-O-U-R-B-O-R, Bourbon। बिस्किट आता है, इसका खाए हो आतिल? Bourbon, यही आता है ना, वही स्पेलिंग वही होता है, मुझे लगता है, राइट। सर चॉकलेट पसंद नहीं है हमको। चॉकलेटी बिस्किट पसंद नहीं है। It's basically biscuit. Anyway, okay. Then Mughal Empire, Ottoman Empire in Middle East, right? So the territorial boundary was very large. Okay. So this was very much a political unit. Secondly, economy was agrarian. Economy क्या था? Economy was based on agriculture. Right? अब एग्रीकल्चर तो था, लेकिन यहां पर जो क्लास थी, there was two class. Right? It was basically a feudal society. Society was feudal. Feudal, right? And class was landed, landed class. लैंडेड क्लास थे और लैंडलेस था, जिसको हम लॉर्ड भी बोलते थे और दूसरा बोलते थे सर्फ। सुना है? There is a landed class, that was called lord, and there is a bonded labor, that is called serf. So the economy was based on agriculture in the West, Europe, basically in Europe. And class was divided into two parts. One was landed class. एक तो बड़ा landed class हुआ करता था, जिनके पास काफी जमीनें हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट विजिबल नहीं है क्या? है सर थर्ड पॉइंट आपने लिखे ना, सोसाइटी फ्यूडल। हाँ,
उसके बाद सर जो लिखा नहीं दिख रहा है सर। उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो दिखेगा क्या? सोसाइटी फ्यूडल लिखा, कुछ नहीं लिखा सर। उसका कुछ लिखा ही नहीं मेरे भाई। अभी थोड़ा समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो, लिखवाना हो जाएगा। सो इकोनॉमी वाज एग्रेरियन इकोनॉमी. देयर वाज अ टू क्लास, लैंडेड, right? And landed class was very much big landholder, right? And जब उसके पास ज्यादा लैंड था तो मेजॉरिटी वाज लैंडलेस, दैट इज कॉल्ड सर्फ. They were like bonded labor who used to work on the landed classes, in their field, right? Society was feudal. Again here come to society was feudal. समाज क्या था? सामंतवादी समाज था. लॉर्ड क्या है सर अमीशा? लॉर्ड जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, मैंने कहा क्या? लैंडेड क्लास, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, राइट? उसको हम लॉर्ड कहते थे. वो भगवान हुआ करते थे वहां पर, राइट? और जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था उनको सर्फ कहा जाता था. और वो जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था वो एक स्लेवरी का ही फॉर्म मानिए, राइट? वो बॉन्डेड लेबर हुआ करता था. वो जो लैंडेड क्लास है उनके यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम किया करते थे और जैसे तैसे जीवन गुजारा किया करते थे. सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी फ्यूडल थी, जहां पर ऑफ कोर्स लॉर्ड हुआ करते थे और सर्फ हुआ करता था. और सर्फ का जो जीवन हुआ करता था, टू सर्व द लॉर्ड. टू सर्व द लॉर्ड. समझ में आ रहा है? बहुत ही संक्षेप में, राइट? ओके. थोड़ा कोई समझाएगा जितना मैंने समझाया है अभी? Anyone can explain? 5 minutes? Take 2-3 minutes? No one? Janvi? Yeah. Avinay, yeah, go ahead. या सर, सो बेसिकली आपने प्री मॉडर्न टाइम्स के बारे में बताया बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द मॉडर्न टाइम्स सर. Right. So sir, pre-modern times you have given like certain points, like number one being sir कि पहले territorial boundaries जो होती थी, they were like huge. They were like they used to be vast. Ancient time में there was a tiny state, tiny city state, and then Yes. modern medieval time में it was a big empire. Yeah. Yes sir, जैसे बोर्बन एम्पायर, मुगल एम्पायर, जो मतलब काफी बड़ा लैंड होता था उनके उस किंगडम के अंदर. सेकंड सर, बेसिकली अब इस किंगडम की जो इकोनॉमी होती थी वो मोस्टली एग्रेरियन होती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी. और सर इसके अंडर जो क्लासेस होती थी वो दो क्लासेस होती थी बेसिकली, लैंडेड क्लास और लैंडलेस क्लास. जो जिनके पास लैंड होता था उनको लॉर्ड्स बोलते थे, एंड दोज हु वर लैंडलेस दे वर कॉल्ड एज सर्फ्स सर. So serfs were basically required to serve the lords because the lords had the land and serfs were landless basically. So they only had to serve the lords sir. और sir finally जो society होती थी basically that was feudal in nature sir. Yeah, feudal in nature. Very good. So economy, society, politics बता दिया. One more thing was that fourth is church used to intervene in everyday affair. Basically, the church, it was a church state, right? In this period, church used to play a very important role. In politics.
अभी बताएंगे क्या रोल प्ले करते थे, राइट, क्या बातें हुआ करती थी, एक कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। लेकिन अभी ये लिख लीजिए कि चर्च यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। लिखिए ऑफन it was referred or it is said that often it is said that church often it is said that church was a supreme authority in medieval time, right? Even there are many practices within church that continues today, right? So church was very much influential. Even the church authority was dominant over the authority of the king. ये लिख लिया, इतना छोटे छोटे पॉइंट हमेशा लिख लीजिए, अच्छा रहेगा ये छोटे छोटे पॉइंट। अच्छा, अब ये मेडिएवल टाइम था। आप सोचेंगे सर ये हमें बता क्यों नहीं आप मुझे, हमें तो आपको मैकियावेली बताना चाहिए था, आप ये क्यों बता रहे हैं? तो मैं पूछूंगा अच्छा मैकियावेली हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इससे पहले थिंकर क्यों नहीं पढ़े? 5th सेंचुरी से क्या 15th सेंचुरी तक कोई ऐसा पॉलिटिकल थिंकर नहीं हुआ जिसको हम पढ़ते? क्या कहेंगे आप लोग? Largely, this period is called a dark age of political thought. There was a few thinkers, but their thought was very much aligned with the 4th point, religion. Right? So, the medieval age largely was the age of, it's called dark age in the history of political thought. Yes, Nistha. Yes, Nistha. Exactly, Janvi. Very good. Very good. You got it. You got the point. That's why I'm just discussing it, right? There is a purpose to discuss, right? Yes. So इतना तक लिख लिया आप लोगों ने? अनिशा लिखा छोटा छोटा पॉइंट बना करके कि हाँ एक जो कोई जब आप फिर से मैकियावेली शुरू करें तो आपको दिमाग में रहे ये चीज, ठीक है, राइट। सो आप लिख सकते हैं कि medieval age that means 5th देखो TH पहले लिख दिया, 5 बार में लिखा। आखिर तुम भी ऐसे करते हो क्या? एग्जैक्टली ऐसे करता हूँ। 5th century to 15th century, right? Medieval age is called as dark age as in the history of political thought. In the history of political thought.
Now, one more thing we need to discuss is that church state, because this is a political activity. थोड़ा सा जानने की जरूरत है डिटेल में. लिखिए चर्च स्टेट. आपको बता दिया मैंने चर्च स्टेट क्या था. एक्चुअली इसको बोलते हैं टू सोर्स ऑफ थ्योरी ऑफ टू सोर्स, दो तलवार की थ्योरी. दो तलवार कौन था? एक तो तलवार किसका लटका रहता था? चर्च का, और दूसरा मोनार्क का, किंग का. राइट. सो मेडिवल टाइम में देयर वाज अ थ्योरी ऑफ टू सोर्ड. एक तो, और दोनों के बीच में काफी टेंशन होती थी, काफी लड़ाई होती थी कि सुप्रीम कौन होगा. राइट. एंड कौन जीतता होगा बताइए मुझे, कि राजा या चर्च? चर्च जीतता था. Church used to win over the king. So church was very dominant. Church was in very dominant position, right? लिखिए, in medieval time, yeah, exactly, अभिनय. इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड देता हूं. In medieval time, the politicization of church has started. Politicization मतलब राजनीतिकरण. हमेशा मेडिवल टाइम में चर्च का राजनीतिकरण होना शुरू हो गया. राइट. एंड चर्च बिकम ग्रेजुअली पावरफुल, एंड ग्रेजुअली church has become very powerful. Very powerful, right? The real power इससे पहले आपको लिखाते हैं एक और लाइन. There are two centers of power. There were two centers of power. कौन कौन? First, the church, and secondly, the king. Yes, monarch. Very good. King, right? दो पावर सेंटर थे. एक चर्च राजा हुआ करता, और इंडिया में भी देखेंगे राजा हुआ करते थे और एक ऋषि उनके गुरु हुआ करते थे. राइट. हैव यू सीन महाभारत, रामायण and etc. Or even during the medieval time, there was a वहां पर उनके वो क्या राज्याभिषेक के लिए वो बड़ा बड़े वो लोग बुलाए जाते थे. राइट. और उनका एक बड़ा स्टिक रहता था, बड़ा ही वो ये रहता था. राइट. सो द चर्च, यहां पर कौन होता था? चर्च में कौन होता था? पोप. और यहां पर ऑफ कोर्स द चर्च एंड द मोनार्क, किंग. मैंने गलत ऐसे लिखना चाहिए था मुझे. मोनार्क, यहां पर किंग. पोप और किंग के बीच में बहुत ही I read about church and feudal lords and the king have lost their influence. What did you read basically? Tell me. Sir, I read
Sir, I read during the Roman Empire. Pardon, please. Pardon. Little part. So during the Roman Empire, the king had lost their influence, and the church and feudal lords were the ones who emerged victorious among them. Because side में से अरब वर्ल्ड invasion कर रहा था, prophets, caliphates, crusades हो रहे थे. More sound. Actually, unable to hear you. Clearly. Yeah, some other voice disturbances is coming from your side, and your voice is not clear. हाँ, yes, मैं बताता हूँ क्यों बताता हूँ. Let me tell you. Will tell you. 1 minute. कैसे? Due to Arab world, just you can say, because that time monarch, this Ottoman Empire was also very influenced. And let me tell you, the spread of Roman Empire. So Roman Empire was in two parts. One was the west and other was the east. So if you look at the eastern side of the Roman Empire, it was still the Istanbul, Turkey. Yes, Istanbul. And if you see the later period of the medieval time, Istanbul became the head of the Muslim ruler, right? So there was a relationship. There was a relationship between the West and the Turkey, basically Istanbul, right? Yes, Constantinople. That is called Istanbul को ही कहते हैं इला. ये जो Constantinople है, मैं वर्ड यूज नहीं किया बिकॉज मैंने सोचा आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करूं. इसको इस्तांबुल को ही कहते हैं, राइट? और हमें कोई लेना देना नहीं है. ये किताब लिखते वक्त कोई यूज करते हैं ये लोग ये वर्ड, बट आपको कोई ये वर्ड यूज नहीं करना है. मेरे पेट में ना दर्द हो रहा है, पता नहीं कल से बहुत ज्यादा अजीब सा हो रहा है. Anyway, so there were two power centers. Let me complete it. There were two power centers. One was church and other was monarch. So in the church, Pope was heading, and of course, king was heading the state, right? So politics of Europe was described as theory of two swords. Theory of two swords. First, swords of the king, sword of the king, and secondly of the Pope, right? Did you get the idea? The politics of the Europe was described as theory of two swords, sword of the king and Pope. इला मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, मुझे पहले ही दे देने दीजिए, बट ये यहाँ तक खत्म कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको. One thing I think I should make more clear to you, आपने जो पढ़ा उसको लेकर के. But first you finish this. Has everyone finished it? Politics of Europe was described, theory of two swords, sword of the king and the Pope, right? What is divine right theory? Divine right theory क्या थी? अच्छा कर लो. Atir, do it.
No, it was not rights of the king. Actually, it reflects that authority of the king are derived from the god, basically. So the king is, a god in human form. That is the divine right thing. His rights are derived from basically God. Right? देख लीजिए, इसको लिखिए. King's authority, it refers to the notion that the king's authority has derived from the god. So ruler are god in the form of human. क्या है कि जो yes, she is taking I think anthropology class anyway. Are you getting her voice? Right? I have to request her just. Yes. So divine right theory, it refers to the notion that king's authority has derived from the god. Rulers are god in the form of human. Okay. So what was the absolute authority? लिखिए. During medieval time, लिखिए, it was the authority of the king plus pope. It was absolute authority, the supreme power on the earth. अगर ये दोनों कुछ कह ले ना हो संभव ही नहीं है. Right? So it was absolute authority, king plus pope. If you are done, then let me know. Then we'll talk about modern. That everyone? Yes. अब मॉडर्निटी शुरू करने से पहले इला पे जाओ. इला, आपने कहा ना कि वो पोप और लॉर्ड मिलकर के कर लेते थे. बताता हूँ क्यों, कैसे कर लेते थे. अब क्या होता था, लेट मी टेल यू. इंडिया का एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में जैसे वहां वेस्ट में चर्च ज्यादा पावरफुल था, यहाँ पर टेम्पल या मॉस्क उतना कभी पावरफुल नहीं हुआ. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट. और यहाँ पर किंग था, आपको पता है. और किंग के अलग अलग मनसबदार थे. हैव यू हर्ड ऑफ मनसबदार? राइट. और मनसबदार क्या होता था? लैंडलॉर्ड हुआ करता था. राइट. इसके पास एक पर्टिकुलर लैंड भी हुआ करता था, आर्मी भी हुआ करता था. आर्मी प्लस लैंड. यस. सो ये किंग को क्या देता था? किंग को अपना आर्मी देता था लड़ाई के वक्त, और फिर ये इकोनॉमी टैक्स देता था. राइट. और इसकी स्वाधीनता थी. ऐसा ही कुछ सिस्टम वहां पर भी था. कहां पर? वेस्ट में, वेस्ट सोसाइटी में. अब मान लीजिए कि ये लैंड लॉर्ड तो बहुत है. अब एक लॉर्ड थोड़ी है. एम्पायर में एक किंग है एंड देयर आर वेरियस लॉर्ड. राइट. सो किंग इज वेरी पावरफुल, ऑफ कोर्स, बट द अदर पावर सेंटर वाज पोप. राइट. अगर पोप ने इस सबसे
रिलेशन बना लिया तो राजा को ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कर देगा. If Pope is able to connect all these landlord, of course he will subordinate, king, right? But if king will connect all these, then it will subordinate the Pope. But it never happened in the medieval time. It was Machiavelli who tried to subordinate Pope, right? Who gave, gave advice to the king. How should you establish a very strong political rule, right? How you should subordinate religion, right? And how you should acquire power. Machiavelli even said, right? Okay, so ये कहा मैंने इलाका कुछ सवाल था हमेशा कि सर पोप इससे किससे लैंडलॉर्ड से मिलकर के किंग को सबऑर्डिनेट कर देते थे. नो प्रॉब्लम हमेशा, नो प्रॉब्लम. Of course, there was a many landlord. Like in Mughal time, the Mughal king had very mansabdar. बहुत सारे mansabdar हुआ करते थे और mansabdar के पास land भी हुआ करते थे और army भी हुआ करते थे, right? और ये landlord जब लड़ाई होती थी तो king को अपने army भेजा करता था और peace time में ये tax भेजा करता था और अपने land के ऊपर यानी छोटे से प्रांत के ऊपर वो जो भी चाहे वो करे. ये किंग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट? सो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे मुगल के टाइम पे भी, देखेंगे आप. इसी तरह का सोसाइटी कहां पर था? ब्रिटेन में भी था. और ब्रिटेन में जब इसी तरह की सोसाइटी थे तो इंडिया में कोई ऐसा पोप टाइप का रिलीजियस अथॉरिटी नहीं था. पोप वाज वेरी पावरफुल. अब जब पोप पावरफुल हुआ करता था तो पोप अगर छोटे छोटे मनसबदार से कनेक्ट कर ले तो ऑफ कोर्स किंग को वो छोटा कर देगा, किंग के इन्फ्लुएंस को कम कर देगा, क्योंकि बड़े बड़े एम्पायर हुआ करते थे, राइट? रोमन एम्पायर वाज अ वेरी लॉन्ग बैक इला, राइट? रोमन एम्पायर डिक्लाइंड बेसिकली, राइट? एनीवे सो इतना समझ में आया मॉडर्न टाइम, मेडिएवल टाइम का. और इला ने इतना Dinesha came after Kurshad. We'll tell you, Ila, how Dinesha came and then what happened in Dinesha, right? And of course, Machiavelli was a child of his time. He was a product of Renaissance, right? We'll tell you, of course, what is Renaissance, right? Okay. So इतना क्लियर है सबके लिए. मेडिएवल टाइम में ये जो जितने कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही समराइज फॉर्म में था कि मेडिएवल टाइम में क्या क्या हो रहा था. नो प्रॉब्लम हमेशा, इट्स ओके. नेट स्लो है, होता है, राइट? Am I making sense? Chanvi, Nishtha, Sarthak. Okay. Ans, will you tell me what story I have told you in today's class? Be bilingual so that your fellow may be able to absorb you. Yes, sir. Like कहाँ से start करूँ, sir? Like church and state शुरू से या? शुरू से start करो कि क्या बताया. Okay, sir. Sir, तो हमने start किया था कि हम divide कर रहे हैं time period को, like ancient, medieval and modern. Right. So
हमने फिर प्री मॉडर्न वर्ड की थी, दैट इज बताएंगे, टू 15th सेंचुरी। एंड इस टाइम पे जो टेरिटरी हुआ करती थी, बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, ये इनका मतलब काफी बड़ा एरिया रहता था। एंड सम एग्जांपल्स आर हैब्सबर्ग, बourbon एंड मुगल एम्पायर। Ottoman Empire in the Middle East. Yes sir, Ottoman। एंड इनकी इकोनॉमी मेनली बेस्ड होती थी ऑन एग्रीकल्चर। And there were two kind of people during मतलब इस empire में, that is the landed class, जिसे हम lords refer करते हैं, and the land, जिससे हम serf हैं, peasants और the workers जो lords के land में work करते हैं। And the system was feudal। Society was feudal। Society was feudal। ठीक है, system society का तो system भी feudal होगा, no problem। हाँ। Yes sir। सर नेक्स्ट आपने ये बताया उस टाइम चर्च का काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था पॉलिटिक्स में भी। एंड इट हैड वन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी, सो द किंग एंड द चर्च, इन दोनों के बीच में काफी क्लैशेस रहती थी हमेशा। एंड सो ये था उस टाइम। एंड द मोर थिंग यू एडेड एज वाज आल्सो नोन एज द डार्क एज ऑफ पॉलिटिकल थॉट। देन हम आए थे चर्च एंड स्टेट पे, जिसे हम थ्योरी ऑफ टू सॉर्ट कहते हैं। जैसे आपने बताया था कि पॉलिटिक्स ऑफ चर्च थी एंड चर्च पावर में आ रही थी। सो द चर्च एंड द मोनार्क, मतलब पॉप एंड द किंग, इन दोनों के बीच में काफी क्लैश रहते थे, बट दे वुड यूजुअली लाइक पीस बना के रखते थे। आपने कि मतलब किंग्स को अपनी आर्मी या फिर टैक्स प्रोवाइड करते हैं, तो एंड देन फर्स्ट वी हैड डिवाइन राइट थ्योरी। What is two swords theory? Theory of two swords. Theory of two swords was that there was a clash between the church and the monarch। इतना ही मेरे को समझ आया, इससे एक्स्ट्रा। अच्छा। Okay, what is theory of two swords? You Asad, you hang on and let other respond, because you have confusion. Yeah, what is the theory of two swords? Nistha, will you speak up? Yeah, Janvi, will you speak up? What is theory of two swords? What did I say? So the theory of two swords basically talks about the power sharing or two centers of supreme authority, one being the church and the other monarch. And the church, basically the Pope exercises authority, and for a monarch, the king, obviously. So that is the theory of two. Very good, very good, very good. Yes, Ans, समझ में आया? Yes sir, like ये समझ गया था बट नोट नहीं किया था मैंने। So अच्छा, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, ये सब चीज। For this divine authority, in this the ruler was referred to as God। They said कि ruler एक God है in the form of human। And then further it was absolute authority in which when is passed king plus pop, then कोई भी against नहीं जा सकता। Right. Yes sir, like इतना ही नोट। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई और बताएगा कुछ इसके बारे में? इसके अलावा मैंने क्या बताया सर? मतलब मुझे पूछना था सर कि क्रिश्चियनिटी में सर दो पार्ट होता है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अभी बताएंगे, अभी मॉडर्निटी में आने दीजिए, का नहीं आया। ये जो चर्च जो पार्ट है सर, ये कैथोलिक्स का पार्ट हुआ ना? तब तक प्रोटेस्टेंट का जन्म ही नहीं हुआ था जब तक हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, तब तक कैथोलिक चर्च ही ओरिजिनल चर्च था, मतलब वही रिलीजन था। जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है वो बाद में हुआ है। अच्छा,
राइट हाँ, तो पोप मतलब समझिए चर्च, जो चर्च का हेड है, हेड ऑफ द चर्च, राइट। अब लिखिए प्री मॉडर्न इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर मोर और लेस, राइट। लिखिए मॉडर्न एज, मॉडर्न एज का क्या मतलब है? मॉडर्न एज, राइट। देखिए it is started with Renaissance. It is started with Renaissance. स्पेलिंग देख लीजिए इसका, प्रोनाउंसिएशन भी। Started with Renaissance. It denotes revival of a region. जिस रीजन की हम बात कर रहे थे, सोक्रेटिस के टाइम पे, प्लेटो के टाइम पे, या अरिस्टोटल के टाइम पे, उसका रिवाइवल था, राइट। उससे पहले आप देखेंगे प्री मॉडर्न टाइम पे रिलीजन यूज्ड टू डोमिनेट ऑल स्फीयर ऑफ द लाइफ। इवन इंडिया में भी आप देखेंगे धर्म अभी भी बहुत रोल प्ले करता है। आपने कुछ पाप किया तो गंगा जाके नहा लीजिए, धुल जाएगा। If you feel something you have done sin, go to and confess sin. Do you know what is confessing sin in the Christianity? Yes, there are lots of corruption, moral corruption. Pope was morally corrupted, right? Anyway, okay, what is Avinay? What is that? Confess. क्या है ये confessing sin? Sir, I have a faint idea only. मतलब basically you go to the church and the father of the church over there, you can basically, without revealing your face or something, you sit in a booth kind of a place where you can basically confess the sin that you have done, and in terms of basically what the father of the church does is he basically आपको बोल देते हैं कि to recite some prayers or to do something so that you are like forgiven for the sin that you have done, sir. Something like this. Right. Kisne? Ila, what is Ila? What is that? Confessing sin? Even I know a little, but yes. Same? Okay. Let me tell you what is the sin. What was the corruption in that? So for example, there is a particular day to confess your guilt, right? So particular day to confess your guilt, and it's popular. So everyone does. So you go and you go alone, and there is no one there, only God and you confess what you have done, right? But the Pope used to listen it very secretly, right? So for example, आपने कुछ कर दिया, कुछ ऐसा कर sin करेगा तभी तो लोग गॉड के सामने एक्सेप्ट करेगा, राइट? कि सर मैंने आतिर का बैग मतलब पर्स लेके आ गया, मुझे माफ कर देना, ठीक है? अब पोप क्या करेगा, कुछ समय बाद वो बोलेगा कि तुमने ये सब काम किए हैं। अब उसको तो पता है कि कोई जानता नहीं वो, और the Pope used to portray themselves as a image of God, right? And they used to extract money and other thing, right? And इसको sexual harassment के लिए बहुत यूज किया जाता था, right?
So, for example, किसी girls ने accept किया कुछ भी, if that she worships something she did shame, or Pope ने उसे सुन लिया, and then Pope starts blackmailing her, right, and sexually exploiting, yes, misusing. Right? That was thing. Anyway, so modern age started with the revival of religion, basically. In Europe, people started questioning the authority of the church, questioning authority of church, that is authority of the Pope. Authority of Pope. There was a huge protest against conventional or traditional Orthodox Christianity. Orthodox Christianity, known as Protestantism. Asha. There was a huge protest against conventional or traditional Orthodox Christianity, known as Protestant movement. Protestant movement. Right? Protestant movement, पैरा चेंज करके लिखेगा, started questioning Protestant movement emphasized on individual freedom, scientific knowledge, new mode of production, and morality. It also represents the beginning of toleration. And secularism.
and secularism, that is separation of church from the state. Of church from the state. Yeah, यहाँ तक लिखिए. If you're done, then let me know. Right? Very good. Very good. Sarthak, done? Okay. Okay. Sunita, समझ में आ रहा है सुनीता? क्या लिखा था? क्या? Separation of church from separation of church from the state. State. From the state, yes. Okay. Okay, done? Okay, okay. लिखिए. Meanwhile, trade and commerce. लिखिए. Meanwhile, पैरा चेंज करके. Meanwhile, trade and commerce was growing along with new innovation of technology. New innovation of technology. New market town was also emerged. जब भी न्यू इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, then न्यू मार्केट आता है, राइट? न्यू मार्केट आया था. न्यू मार्केट टाउन were emerging that provided new avenues of employment for serf. A new class of entrepreneurship. A new class of entrepreneurship emerged, who established new business and industry. And industry that was called capitalism. That was called capitalism. हो जाए तो मुझे बताइएगा. If you are done, then let me know. Till the capitalism, right? I'm just giving you context, right? Before teaching you Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, right? So जब मैं Hobbes पढ़ाऊंगा तब ये context नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि already ये context already मैं बता चुका. तब दूसरा context बताना पड़ेगा मुझे, right? So you must. Okay, good. Sunita, done? जो आज नहीं क्लास आए हैं उनको ये वीडियो जरूर देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड मैकियावेली. अदरवाइज वो 3 बार मैकियावेली में मेरे से सवाल करेंगे, सर ऐसे कैसे है, वैसे कैसे है, राइट? Until you don't understand the context, you can't understand the person.
and his thought. लिखिए, पैरा चेंज करके लिखेगा न्यू ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज new geographical discoveries opened up new regime of trade and commerce. Trade and commerce. The discovery of Columbus. आपने सुना होगा Columbus का नाम? You must have heard of Columbus, right? Yeah. The discovery of Columbus and Vasco da Gama enlarged the geographical horizon of the Europe. Okay, tell me where Vasco da Gama goes to. What did Vasco da Gama basically? अगर खत्म हो जाए तो मुझे बताइएगा. वास्को डी गामा, अल्टीमेटली भी वास्को जगह का नाम है. बहुत अच्छा सा रेलवे स्टेशन है वास्को. नहीं, वास्को डी गामा किसका खोज किया? कुछ नहीं. Calicut. And I think, Ella, sea route to India basically, and Vasco reached to Goa. He was a Portuguese. Calicut, okay, Calicut. He reached to Calicut. Yeah. And then they established their role in Goa. Calicut is that other side, no? Or no, it's there, along the line of west coast. My geography is very bad. Calicut is in Kerala. Okay, then west coast. Calicut means Calcutta, nahi, Janvi. Is it Calicut? Yes. Sir, I know Calicut is not Kolkata. I'm talking about Calicut only. He reached Calicut. Yeah, he reached Calcutta. I'm not disputing that. But Calicut is along the line of west coast. That I'm asking. Is it that Calicut along the line of west coast? Along the line of Goa and this Karnataka and then Kerala? Is it that? Malabar, right? Is it Malabar? Okay. Acha, Kozhikode. Yeah, exactly. Thank you, Jan. Thank you. Kozhikode, yes. Kozhikode is a district now. Right. Anyway, so Vasco da Gama came to India, then this man, or किसी और का नाम मैंने लिखवाया है, वास्को डी गामा के बाद कोलंबस गया और अमेरिका ढूंढ ले आया, राइट? उधर चला गया, कैरिबियन कंट्री को ढूंढ लिया. It was a very much, expansion of geographical origin of the Europe, right? And it was also, this led to growth of in commerce, trade, also, and economic development, and that becomes the basis of modern capitalism. कोई बात नहीं, हमारे लिए अब वो हिस्टोरियन को रहने देते हैं. हमारे लिए
ये मायने है कि इन लोगों का जो ज्योग्राफिकल ऑरिजिन था बहुत बड़ा हो गया, राइट। और ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़ गए, और ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने से क्या हुआ कि कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। हमारे लिए इतना काफी है, राइट। अब हुआ किस साल में हुआ, ये हिस्टोरियन को हम छोड़ देते हैं, वो हिस्टोरियन डिबेट करे, अच्छी बात है डिबेट करे। तो लिखिए ऑरिजिन ऑफ द यूरो, उसके बाद लिखिए दिस लेड, इसी में लिखिएगा दिस लेड टू ग्रोथ इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Economic development and it became the basis of modern capitalism. Basis of modern capitalism. Okay, at the same time, para change करके, at the same time scientific revolution started. With the idea of Copernicus, Galileo and Newton. In philosophy, अब आ रहा है इन फिलोसफी, बस एक लाइन और लिख लीजिए बस। इन फिलोसफी उसी में जोड़ लीजिएगा। इन फिलोसफी it has started the journey was started with Machiavelli, Descartes, Hobbes, and Spinoza. Modernity has associated with and of absolute authority, और एब्सोल्यूट अथॉरिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। devastating, end of absolute authority and beginning of modern notion like individualism, beginning of modern notion or beginning of modern concept like क्या है, इसको पूरा से रीड करना है
At the same time, scientific revolution started with idea of Copernicus, Galileo, and Newton. In philosophy, the journey was started with Machiavelli, Descartes, Hobbes, and Spinoza. Spinoza. The modernity has associated with end of absolute authority and beginning of modern concept like individualism, secularism, and toleration. It is identified with modern nation state. With formation of modern nation state and social and political revolution. Of 1689, 1776, आपको पता है ये है यूके का, ये है यूएस का, एंड 1789 ये किसका है? Which introduced new ideas. इतना हो गया तो मुझे बताइएगा, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है. इतना लिखवाना था आपको कि मॉडर्निटी में क्या क्या, राइट, हाउ वी ट्रांसफॉर्म द एज and what was the actually element which contributed in transformation from Middle Age to modernity. So it was also science and technology, it was also politics or political formation, it was also new ideas, new innovations, it was also economy, right? So the new economy had emerged, right? So डन, सार्थक हो गया, डन. ओके, सब लोगों ने कर लिया? अमीषा डन? सर न्यू आइडियाज के नीचे क्या लिखा है? हाँ जी, न्यू आइडियाज का कुछ नहीं लिखा है, आपके लिए कुछ नहीं. अब न्यू आइडियाज के आगे लिखना है तो लिखिए लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट्स, जो भी लिखना है. ठीक है, ठीक है. हाँ, न्यू आइडिया के नीचे कुछ नहीं लिखा है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट the transformation from pre-modern world to modern world, right? So tomorrow I'll teach you, we will proceed, we will move ahead, we will discuss Machiavelli, but आज इतना ही. क्लास 9:30 तक था या 8 o'clock तक है? 9:30, ठीक है. फिर रहने देते हैं आज के लिए. और फिर any confusion, just ask me. Anything you want to ask. Any question? Sarthak, Ans, Amisha, Avinay, Ashad, कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए. क्लियर है? ओके. Clear, Sarthak? Okay. Atif, do you want to stay today? Okay, so you stay and then everyone will exit. We will just
have 5-10 minutes, 5 minutes talk. Okay, everyone, see you tomorrow. Okay, Amisha, you stay tomorrow. Today it's Atir tour, right? Otherwise, जिसको लगे कि मुझे सर से थोड़ा बात करना है, right? You're welcome. You're most welcome. Bye bye, Amisha. Bye bye, everyone. Take care of yourself. See you, Atir. I'm coming in 2 minutes. Okay, just stay. Yes, Atir. Hello. Yes, sir. Yes, Atir. बोलिए. सर मुझे सर डाउट सर जो है इशू जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. अच्छा, बोलिए, पूछिए. सर जब हमने बैकग्राउंड शुरू किया था. क्या? बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. जी, पॉलिटिकल का. राइट. तब तक तो सब सही चल रहा था सर, मतलब कि ठीक ठाक है. फिर जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. समझ तो आया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये सब क्या है. फिर जब उस दिन एक टेस्ट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और बाकी सर सब कुछ सर समझ में नहीं आ रहा. पॉलिटी मतलब किसके बाद से हो ही नहीं रहा है. आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल समझ नहीं आ रहा कैसे पढूं. फिर उस दिन आपने बोला था कि इतना पार्ट से ये सेक्शन है, ये शेड्यूल है. ये सब कुछ सर पता ही नहीं मुझे. देखिए, कुछ चीजें तो जैसे अब बेयर एक्ट है आपके पास, पीएमबक्सी का है, नहीं है? वो ले लीजिए ना. जी सर, इस बार पापा का भी सैलरी मिलेगा तो ऑर्डर कर दूंगा उसको. हाँ, और एक दूसरी चीज और, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है 11th का, जी, उसको भी ले लीजिए. ठीक. ये दो किताब. क्लास 12 का भी लेना पड़ेगा सर पॉलिटी. यस, 11th का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. जी, वो ले लीजिए. एक बैरक ले लीजिए, लक्ष्मीकांत है. क्लास लेते रहिए. कुछ कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हुआ, जैसे लिबर्टी का, इक्वालिटी का, राइट, है ना? वो हम उसको यहाँ पर बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे PSIR में. तो फिर आप दोबारा जब प्रियम्बल के अलग अलग पॉइंट को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अभी जो हम जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हैं आपको,
तो अलग अलग जजमेंट पढ़ा रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं, उसको समझिए और 10 बार उसको पढ़िए, याद हो जाएगा। जिससे आर्टिकल 14 बताया, तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हाँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसका क्या मतलब है, दोनों में क्या अंतर है, ये तो समझ में आया होगा या नहीं आया? जी सर, ये सब तो आ रहे हैं समझ में। आ रहे ना? जी। उसके आर्टिकल सर मतलब कि पूरा बाय हार्ट रटना ही पड़ेगा, लाइक जो जो आप पढ़ा रहे हैं आप 10 उसके बार बिना पढ़ोगे तो ना, समझ याद हो जाएगा। बहुत रटने की क्या जरूरत है, उड़ जाएगा। 4 दिन आप पढ़ो, 10 बार पढ़ो, उसके बाद भी 4 दिन के बाद वो गायब हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो गायब नहीं होता है, वो रिस्टोर हो जाता है कहीं एक जगह पे जाके, ठीक है, आपके दिमाग में। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हमें पढ़ने पड़ेंगे। उस वक्त 10 बार पढ़िए, याद कीजिए, फिर भूल जाइए उसको। जब सवाल आते हैं तो फिर से याद आएंगे आपको। रिवीजन के वक्त फिर से एक बार और पढ़िएगा आप, जब सवाल आएंगे तब दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा क्या होगा। हो सकता है उस वक्त कंफ्यूजन हो, आप एरर कर दें, मोस्ट पॉसिबल थी आप गलती कर दें, होगा, ठीक है। इसीलिए तो हम हैं कि इस प्रोसेस से आपको ले चलें, और जब आप यूपीएससी अटेम्प्ट करें तो वहां पर गलती कम करें। ऐसा नहीं कि वहां पर गलती नहीं करेंगे, वहां पर भी गलती करेंगे, इतना करने के बावजूद भी, जी राइट, बट गलती कम करेंगे, हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है आपको इस प्रोसेस में ले जाने के बाद। आज एक्चुअली ना पॉलिटिकली मैं थोड़ा बहुत सॉरी, मतलब कि पॉलिटिकल ये साइंस जो है सर, इसमें मुझे लग रहा है मैं बहुत वीक हूँ। हालांकि मेरा इंटरेस्ट बहुत इसी सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल और PSIR में, पर मुझे लग रहा है सर साइंस बैकग्राउंड से मैं सर, तो आर्ट्स का कोई मतलब बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको 10-12 बार पढ़ते रहो। जी PSIR में तो आप ठीक ही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल। जी सर, PSIR तो ठीक है, अभी चल रहा है, स्टार्टिंग पे अच्छा ही सही चल रहा है। पर जो अपना इंडियन पॉलिटिकल साइंस है उसमें वो भी अच्छा चलेगा। अभी जैसे आर्टिकल 14 पढ़ाया, अब शुरू जैसे आर्टिकल 12 के बाद आप ध्यान में रखो। और आपको जैसे प्रियम्बल बताया, आई नो प्रियम्बल बताया, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए मैंने, और कॉन्सेप्ट वो आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत ही कंटेस्टेड है। वो कॉन्सेप्ट फिर से जब हम थियरी पढ़ेंगे तो वो हर कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे PSIR में। जी सर। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्या है, क्या कहता है, 14 के जो कंपोनेंट एलिमेंट है, हाँ, अच्छा, वो आर्टिकल 14 के जो एक्सेप्शंस हैं वो, ये सब आप अब थोड़ा अब उसको कैरी कीजिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है आतिफ? जी सर। हाँ, मुझे लग रहा है तो बेयर एक्ट भी नहीं है ना, तो और भी इशू पड़ रहा है। एग्जैक्टली, और कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप आ जाए तो मैं, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा बेयर एक्ट है, अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा। सर नोएडा आना पड़ेगा ना? आना तो पड़ेगा। जी सर। सर पापा मेरा नोएडा ही में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं को बोल दूंगा, या फिर मैं ले लेता हूँ खुद ही। बोल मैं दीजिएगा, ऑनलाइन कर दूंगा सर, मैं ऑनलाइन कर लूंगा ऑर्डर। जी सर। हाँ, ऑर्डर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ये लंबा चलेगा आपके लिए, खींचेगा। जी सर, ठीक। एक बेयर एक्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है? ओके सर। नहीं तो चाहिए तो कभी आ जाइए, या पापा को बोल दीजिए, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो बताता हूँ उतना ही पढ़िए, 10 बार पढ़िए उसको, ठीक है, उतना तो 10 बार पढ़िए। उसके बाद आप जो भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो भी पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बट जितना बताऊं उतना जरूर पढ़िए, ठीक है सर? आज का पॉलिटी क्लास में थोड़ा एक बार सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता दीजिएगा ना। मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि बट सर आज की क्लास में ना, आज की क्लास में वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कभी आपको अकेले में बता दूंगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। ओके सर। कब, इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में, जब आप चाहेंगे मुझे बताइएगा। ओके सर, ठीक है सर। ओके, आपको जैसा कन्वीनियंस रखे सर, आप वैसे आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं लिख दूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसी वीक में सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे कभी भी आपको स्टे करके बता दूंगा, ठीक है? जी सर। चलिए, और बताइए। बस सर यही इशू था
हो जाएगा रिजॉल्व। इशू होना अच्छी बात है, जब पढ़ेंगे देखिए आप समझ नहीं आया, नहीं पढ़ेंगे तो छोड़ दीजिए, कोई समझने की कोई बात ही नहीं है जी। तो मैंने बताया पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेस होगा, दिमाग में जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम।